کے لیے پیش کرتے ہیں، اور آج یہ جو پیشکش ہے یہ ریڈیو پاکستان ملتان کی ہے. آئیے سنتے ہیں. پاکستان ہماری پہچان. وطن عزیز پاکستان کی آزادی کی 75 سالہ تقریبات کے حوالے سے ضلع ملتان کی سیاسی و سماجی شخصیات کے صوتی پیغامات. مذہبی و سماجی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری. یہ امر باعث مسرت ہے کہ ریڈیو پاکستان وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے 75 سال پر خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے. جہاں تک قیام پاکستان کا تعلق ہے تو چشم فلک نے اتحاد و یگانگت کا ایسا حیران کن منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. فکری تضادات کے باوجود ساری قوم ہم قدم، ایک قائد، ایک پرچم اور ایک نظریہ لے کر محو سفر تھی. روشنی کے اس مقدس سفر میں ایک قوم بن کر ایک نصب العین کے لیے سب مرد و زن اور چھوٹے بڑے سرگرم عمل ہو گئے. سچے پاکستان کے باشندے کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرتی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کریں، اور ہمہ وقتہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتے ہوئے خود سے یہ سوال کریں کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے اپنے محدود معاشرتی دائرے کے اندر ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں جن سے ہماری پاکستانی دوستی ثابت ہو سکتی ہے. ہم یہ اقدامات ہمسایہ کی بروقت اعانت سے لے کر اپنی گلی یا محلے میں ایک مہذب ماحول قائم کرنے تک پھیلے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. پھر خود سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قومی سطح پر کون سے اقدامات کیے ہیں جو ہمیں ایک سچا پاکستانی ثابت کر سکتے ہیں. ہر سچے پاکستانی کو متعدد سطحوں پر اپنی پاکستان دوستی کا مظاہرہ کرنا ہے، شخصی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. ہر حال میں اپنے وطن، اس کے کلچر، اس کی اسلامی روایات، اس کے خوابوں سے خود کو منسلک رکھنا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ اس کا وہی رشتہ ابھرے جو جسم و جان کا رشتہ کہلاتا ہے اور جس کی بہترین مثال قائد اعظم نے پیش کی تھی. دور حاضر میں ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کامل اتحاد کا مظاہرہ کریں. اللہ تبارک و تعالی وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین. ممتاز دانشور و ادیب محترم حفیظ خان. پاکستان اور ریڈیو پاکستان کا جنم ایک ساتھ ہوا. اب کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو تو پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن وہ جو ریڈیو پاکستان ہے وہ جو ہر پاکستانی کے اندر جاگتا ہے، اور وہ جو پہلی آواز گونجی پاکستان بننے کے وقت رات کے 12 بجے، وہ ریڈیو پاکستان تھی. اور ریڈیو پاکستان نے پاکستان کے ہر عہد میں ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا جزو لا ينفک ہے، اس کے ساتھ سانس لیتا ہے، اس کے ساتھ جیتا ہے، جاگتا ہے، اس کے ساتھ مشکلات کو بھی فیس کرتا ہے، اس کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں کو دیکھتا ہے. اور یوں پاکستان اور ریڈیو پاکستان لازم و ملزوم ہو کر چلے ہیں. مجھے یاد ہے 1965 کی جنگ جب ہوئی تھی بھارت کے ساتھ ہماری، تو ہماری فورسز کو اور ہمارے شہریوں کو حوصلہ دینے والا کون تھا؟ وہ ریڈیو پاکستان تھا. آپ ذرا اس وقت کے وہ ترانے یاد کیجئے، وہ جذبہ یاد کیجئے جو ہمارے پروڈیوسرز صاحبان تھے، جو ہمارے میوزک بنانے والے تھے، جو ہمارے شاعر تھے. وہ ریڈیو پاکستان لاہور کی عمارت میں اکٹھے ہوتے اور وہیں بیٹھ کر ایک ہی نشست میں ایک ایسا ملی نغمہ تخلیق ہو جاتا کہ جو پاکستان کی زبان بن جاتا اور ہر پاکستانی کی زبان پر بھی ہوتا تھا. وہ ریڈیو پاکستان ملتان اور ریڈیو پاکستان بہاولپور سے میرا تعلق رہا ہے خاص. 1975 سے 1976 تک ریڈیو پاکستان بہاولپور اور پھر 1976 سے 1980 تک ریڈیو پاکستان ملتان.
मैंने रेडियो पर जिस तरीके से काम होते देखा वो शायद पाकिस्तान का एक वाहिद मैं कहूँगा एक इदारा कि जहाँ हमारे जो तख्लीककार हैं तख्लीक के लिए आते हैं और वो तख्लीक उनके सामने एक ही मकसद होता है और वो होता है पाकिस्तान और पाकिस्तानियत। कोई भी वक्त हो, कड़ा वक्त हो, जंगें हो, सैलाब हो और कोई भी, तो रेडियो पाकिस्तान सबसे पहले अपने पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना खड़ा होता है। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान के 75 साला जश्न को इस तरीके से मना रहा है कि मेरे नजदीक ये जश्न रेडियो पाकिस्तान का भी जश्न होकर रह गया है। जी रेडियो पाकिस्तान, जिए पाकिस्तान। हमारी पहचान पाकिस्तान, तू सलामत रहे ऐ पाक वतन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से रावी और प्रोड्यूसर नईम अकबर खोसा। जी जनाब, ये तो हमारा सिलसिला था हमारी पहचान और इसमें जो है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पेशकश थी, ये आपके लिए हमने पेश की। प्रोग्राम है सुबह पाकिस्तान पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। आपके जो है वो नाम और आपका प्रोग्राम के बारे में पसंदीदगी का इजहार हम तक पहुंच रहा है और इंशाल्लाह आपके नाम भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है अरशद महमूद की आवाज में, तो वो आपको सुनवाते हैं। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा।
भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा ये मैं की सांसें तेरी जैसे चमन में हवा तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा से सदा जाना तेरी गुफ्तगू झरनों की जैसे सदा दूरों को है आरज़ू देखे तेरी एक अदा इस दिल पे तीरे नजर जो तूने मारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा जनाब प्रोग्राम है सुबह पाकिस्तान पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से कौमी नशरियाती राबते पर और अरशद महमूद की आवाज में नगमा अपने वक्त का मकबूल नगमा था ये हमने आपके लिए पेश किया उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जनाब आज वाजिद अली नाशाद जो हैं मुमताज फिल्मी मौसीकार उनकी आज बरसी है तो उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे वाजिद अली नाशाद 18 जून 2008 को पाकिस्तान के मुमताज फिल्मी मौसीकार वाजिद अली नाशाद लाहौर में इनकी वफात हुई थी और आप लगभग 1952 के करीब आप पैदा हुए थे और पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी मौसीकार शौकत अली नाशाद के फर्जंद थे आपने 1977 में फिल्म परस्तिश की मौसीकी तरतीब देकर अपने फिल्मी करियर का आगाज किया और मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी 300 फिल्मों की बैकग्राउंड मौसीकी और 100 के करीब टीवी सीरियल्स के टाइटल बनाए थे वाजिद अली नाशाद की बतौर मौसीकार आखिरी फिल्म तड़प जो है वो 2006 में रिलीज हुई थी और इनका जनाब एक नगमा भी हमारे पास इस वक्त है जो हम आपको सुनवाते हैं से तुम जाना नहीं दूर दूर मेरे पास रहना तुम जरूर जरूर आपके पाँव के नीचे दिल है आपके पाँव के नीचे दिल है तोड़ न देना हुजूर तोड़ न देना हुजूर आंखों से तुम जाना नहीं दूर यूं तो जहां में लाख हंसी थे हमको पसंद लेकिन वो नहीं थे यूं तो जहां में लाख हंसी थे
हमको पसंद लेकिन वो नहीं थे, तुमको देख के जम गई आंखें, एक जगह पे थम गई आंखें, दिल और आंखों की है शरारत, ओ दिल और आंखों की है शरारत, मेरा क्या है कसूर, मेरा क्या है कसूर, आंखों से तुम जाना नहीं दूर। जी जनाब, हम बात कर रहे थे वाजिद अली नाशाद मरहूम की, तो उनकी मौसीकी में तरतीब दिया गया ये नगमा था अहमद रुश्दी की आवाज में। फिल्म का नाम था परस्तिश और प्रोग्राम है सुबह पाकिस्तान। रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। जी जनाब, ये हीट वेव के हवाले से जो है कुछ एहतियाती तदाबीर थी, इन पर हमने अमल करना है और बच्चों को भी सख्ती से पाबंद करना है कि वो अपनी जो है इसका सख्त गर्मी में बाहर निकलने से परहेज करें। और जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना और ऊपर सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है, तो आपको चाहिए कि आप पानी पीकर घर से निकलें और सर पर कोई कपड़ा वगैरह रखें, क्योंकि एक चीज और होती है, जो गहरे कलर होते हैं, जो गहरे रंग होते हैं, उनका इस्तेमाल उससे जो है वो माहिरीन मना करते हैं कि गर्मियों में उसका इस्तेमाल कम करें और हल्के रंग के कपड़े जो है वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ये गहरे कलर होते हैं ये सूरज की गर्मी को और तपिश को ज्यादा खींचते हैं और उससे जो है वो हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। आते हैं जनाब आपके जो कॉल्स हैं, यकीनन आपको इंतजार होगा। ये हैं वफा यासीन चांडियो हैं, जिला दादू से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। यामीन अली चांडियो हैं और यासिर अली चांडियो हैं। अली अहमद लाशर हैं खैरपुर से। शुएब अहमद लाशर हैं। कश्मीर खान हैं खैबर एजेंसी से। नाज फकीर जलालानी, महबूब नाज जलालानी गोट, गुलाम हुसैन जलालानी से। गजाला खान कल्लर कहार से हमारी रेगुलर लिसनर हैं, कॉलर हैं। रुखसार बेगम इस्लामाबाद से। लाल हुसैन जाफरी, रशीद तबस्सुम कोटद्दू से। सबा तलागंग से और मीर मुमताज अली जतोई, सागर साजिद अली गोट, आगा खान जतोई से। नसीम हैदरी फकीर हैदरी सांगड़ से। अहमद बशीर अहमद पठान है बदीन से। नादर अली कबूल तंदवानी सिंध से और फरा अली रावलपिंडी से। जंड अटक से सफीर अहमद मलिक, शमसुल कमर आकिफ हैं और इसके अलावा गोट गुलाम हुसैन जलालानी से। नाज फकीर मोहम्मद जलालानी, महबूब नाज जलालानी। और आपने प्रोग्राम को पसंद किया है, बहुत शुक्रिया। कुमरी सिंध से श्रवण कुमार कोहली, डॉक्टर अनीता पारस हैं, संगीता पारस हैं और हरचंद मकवाना सुबह का सलाम आप दे रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और ये गोट काजी आरिफ दादू से हैं। वफा यासीन चांडियो हैं और इसके अलावा सोनिया मुनव्वर हैं बखर तहसील कलोर कोट से। इन्होंने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। और इसके अलावा सिटी कोलाची से हैं परदेसी होड़ो खान जट, आपने भी जागता पाकिस्तान सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को आपने सलाम कहा है। और हैं मलका भरी खिप्रो से, आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। और ये सईदुल हसन तूर हैं, मिकाइल अब्बास तूर हैं और डॉक्टर गुलजार अहमद हैं फतेहगढ़ सरगोदा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और आपने कामरान तारिक को सलाम कहा है जी, वो भी वालेकुम सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद आशिक पठान हैं, अजमल पठान हैं, अकमल पठान हैं, नवीद पठान जमालपुर हासिलपुर से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। प्रीतमाबाद से हैं मोहम्मद रहीम बिरोही, अब्दुल रहीम बिरोही प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। शहर ढेंगा बोरगढ़ी से माऊजी मल, दादू मल सब टीम को खुशामदीद कह रहे हैं। सिटी नवाबशाह से मीर अमानुल्लाह बिरोही और हिज़्ब चांद बिरोही प्रोग्राम को पसंद किया है। गुलाम कादिर हैं कोहाट से, रेडियो की पूरी टीम को आपने सलाम कहा है। बरकत चमाली बलोच हैं
علی حسن جمالی بلوچ ہیں ضلع جعفر آباد بلوچستان سے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. جیکو آباد سے عرش محمد گولا سلطان گولا اظہر علی گولا آپ کو پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پروگرام, بہت شکریہ. عقل امین کرک سے ہیں, سلام دے رہے ہیں اور صوبہ پاکستان کی ٹیم کو بھی آپ نے سلام کہا. وعلیکم السلام. عاشق حسین ہیں, عاشق حسین گرمانی سے اور کہتے ہیں جی صوبہ پاکستان میں ہمارا سلام پہنچے, پروگرام زبردست ہے اور ہمیں بہت پسند ہے, بہت شکریہ. محمد بچل سولنگی ہیں تندو جام سے, آپ بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں جی. یہ اور بھی ہمارے پاس نام پہنچ گئے. مزمل سعید ہیں, عمر دراز کمبول ہیں, حاجی غوث چانڈیو ہیں ضلع مظفر گڑھ سے, اور زاہد ہیں سید سروش شاہ ہیں خیرپور سندھ سے, ملتان سے رانا صفدر نون, راجہ ذوالقرنین کیانی ہیں آزاد کشمیر سے, عارف وقار ہیں خانے وال سے, ملک نظر حسین, محمد حنیف آہی ہیں اوش شریف سے, ڈاکٹر علی شیر شیخ ہیں سکھر سے, آفریدی ہیں تورخم بارڈر سے, حنیف فردانی ڈی جی خان سے, پیر ملوک شاہ سے پیر ملوک شاہ دربار اللہ خانے وال سے, واجو ہیں آصف ہیں خیبر سے, سلیم علی ہیں کوٹ بنگلو سے, غلام عباس ملا ہیں روڑی سے, اور غلام سرور کھوسا جعفر آباد سے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اور یہ ہے مہران چوک بدین سے محمد رفیق ملا, سائمہ ناز ملا, بیبی فرزانہ ملا, بیبی فضا ملا, پروگرام کو پسند کیا آپ نے. اور جی یہ تو تھے آپ کی کالز, آپ پروگرام میں اتنی محبت سے کال کرتے ہیں اور ہم نے آپ کے نام پروگرام میں شامل کیا. پروگرام ہے صوبہ پاکستان, پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر, اور اس وقت ہمارے پاس ایک خوبصورت نغمہ ہے, آئیے سنتے ہیں. یہ سب کچھ جو تیرے آس پاس ہے, یہ سب کچھ جو تیری زندگی میں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ جو تیرے آس پاس ہے, یہ سب کچھ جو تیری زندگی میں ہو رہا ہے. کیا یوں ہی سب کچھ مانگا تھا, کیا یوں ہی سب کچھ مانگا تھا, جو بھی تو نے پایا ہے, یہ سب کچھ جو تیرے آس پاس ہے, یہ سب کچھ جو تیری زندگی میں ہو رہا ہے. کیا یوں ہی سب کچھ مانگا تھا, کیا یوں ہی سب کچھ مانگا تھا, جو بھی تو نے پایا ہے. لگتا ہے روک دل پر نہ لو, سوچ نہیں برا نہیں, دنیا ہے ہوتا ہے جو بھی کہتے ہیں لوگ, ہونے ہی دو, رک نہیں, لوگوں کی کیوں مان لے, دل پہ کیوں نہ دھیان دے, دیکھیں گے ہم, سوچیں گے ہم, روکیں گے ہم, ٹوکیں گے ہم, بولیں گے ہم. یہ سب کچھ جو تیرے آس پاس ہے, یہ سب کچھ جو تیری زندگی میں ہو رہا ہے. کیا یوں ہی سب کچھ مانگا تھا, جو بھی تو نے پایا ہے, یہ سب جو تیرے جو تیری زندگی.
जनाब, शहजाद राय की आवाज हमने प्रोग्राम में शामिल की. प्रोग्राम है सुबह पाकिस्तान. हमारे पास कॉल आई इनायत गुल की डीजी खान से. आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है. जनाब, बात यह है कि हमारा जो मजहब है वो भी ये कहता है, और वैसे भी, कि सफाई निस्फ ईमान है और हमें अपनी सफाई को जिंदगी का लाजमी जुज़ बनाना चाहिए. ये बात हम इस लिहाज से कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात, वहां पर तो यूं समझ लीजिए कि कुदरती हुस्न बिखरा हुआ है. लेकिन वो हुस्न उसी सूरत में कायम रह सकता है कि जब हम वहां पर सफाई का ख्याल रखें. होता यह है कि हम भी और सयाह जब वहां जाते हैं घूमने फिरने और वहां पर उसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, तो वो सफाई का ख्याल नहीं रखते और कूड़ा करकट और जो शॉपिंग बैग हैं या दूसरे इसी तरह के जो रैपर हैं वो वहां पर फेंक देते हैं. उससे यह है कि ये जो इलाके हैं इनकी खूबसूरती मान पड़ने लग जाती है, और फिर उनके बाद जो लोग जाते हैं वो वहां पर जब इस तरह की गंदगी देखते हैं तो फिर उससे बहुत उनको जो है ना कोफ्त होती है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इन इलाकों में जाएं तो वहां पर सफाई का ख्याल रखें. जितना ज्यादा ये इलाके खूबसूरत होंगे, साफ शफाफ होंगे, उतना ही ज्यादा हम इसको एंजॉय करेंगे. और इसके अलावा जिस तरह आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं और वो भी ये कहते हैं कि जनाब हमने इलाकों की सैर करनी है, तो आप उनको लेकर जाएं, लेकिन सफाई का जरूर ख्याल रखें. मुश्किल है जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है. यूं खो गए तेरे प्यार में हम. सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे. धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे. यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम. दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के. काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से, ले आया है हमको शौक जहां उस प्यार की रंगी मंजिल से. अब लौट के जाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम. किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल. जी जनाब, आज का नगमा हमने आपके लिए पेश किया और ये मुजीब आलम की आवाज थी. इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का वक्त अब खत्म होता है. अपने मेजबान रिजवान हाशमी और प्रोड्यूसर कामरान तारिक को दीजिए इजाजत. और इस वक्त 8 बजने वाले हैं. ठीक 8 बजे रेडियो पाकिस्तान से खबरें नशर की जाएंगी. hours Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Today is Saturday, the 18th of Dhul Qa'dah, June the 18th. This is Radio Pakistan. The news read by Asif Hanif. First,
The headlines. Financial Action Task Force has acknowledged the completion of Pakistan's action plans and authorized an on-site visit to Islamabad as a final step to exit from grey list. Prime Minister has filed a State of Nation on Financial Action Task Force announcement, saying that it is recognition of restoration of Pakistan's international reputation. President has stressed the need to explore Gilgit-Baltistan's great potential in mining, agriculture and tourism sectors. The government has allocated over 100 billion rupees in the federal budget 2022-23 for the construction of dams. Pakistan cricket team has claimed the third position in International Cricket Council's ODI rankings. And now the news in detail. The Financial Action Task Force has announced that Pakistan has substantially completed its 2 action plans and would be removed from the grey list after it passes the on-site visit. According to Foreign Office, the Financial Action Task Force reviewed Pakistan's progress on FATF action plans in its plenary meetings held in Berlin. FATF has acknowledged the completion of Pakistan's action plans for 2018 and 2021 and has authorized an on-site visit to Pakistan as a final step to exit from the FATF's grey list. The FATF members, while participating in the discussion on Pakistan's progress, congratulated Pakistan for completing both action plans covering 34 items and especially on the early completion of the 2021 action plan in a record time frame. They said Pakistan continued its relentless efforts towards successful completion of these action plans despite many challenges including the COVID-19 pandemic. They admitted that Pakistan has covered a lot of ground in the AML and CFT domain during implementation of FATF action plans. The engagement with the FATF has led to the development of a strong AML and CFT framework in Pakistan and resulted in improving of the systems to cope with the future challenges. Prime Minister Shehbaz Sharif has filed a State of the Nation and welcomed the announcement of Financial Action Task Force that Pakistan has met all its conditions for exclusion from the grey list. In a statement, he said the return of Pakistan to the white list is a big success of the country. The Prime Minister said the efforts of the basic cell related to FATF and of military and civil leadership included in it are praiseworthy and credit goes to them for their work in this national endeavour. Shehbaz Sharif said the statement of FATF is recognition of the restoration of international reputation of Pakistan. He said such good news will be destiny of Pakistan in future. He said the return of Pakistan to the white list will help in improving the economic and financial situation of Pakistan. Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa has said the completion of the Financial Action Task Force Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Action Plans by Pakistan is a great achievement. According to ISPR, the Army Chief said the achievement is a monumental effort for paving way for whitelisting. President Dr. Arif Alvi says Gilgit-Baltistan has a great potential in mining, agriculture and tourism sectors and this needs to be explored for development. Talking to members of Gilgit-Baltistan Assembly in Gilgit, he said talented and skilled manpower is required to utilize the natural resources of Gilgit-Baltistan for the development and prosperity of the region. The President said as an ambassador of Gilgit-Baltistan, he has advertised the beauty of the province at various forums to attract tourists to the region. Dr. Arif Alvi said Gilgit-Baltistan is tax-free, but a small taxation system should be set up to collect tax from tourists visiting the region. Our Gilgit correspondent Sher Muhammad reports that President interacted with elected representatives and assured to address their problems. This is Radio Pakistan. Minister for Water Resources Syed Khurshid Ahmed Shah says the government has allocated 105 billion rupees in the federal budget 2022-23 for the construction of dams. Talking to PTV News, he said the government has expedited the construction of work on Dasu, Diamir Bhasha and Mohammed dams with the aim to complete them at earliest for conserving water. Khurshid Shah said the construction of new dams will not only help address water and energy crisis but also generate jobs, tourism and business opportunities. Pakistan and Canada have agreed to enhance bilateral cooperation in diverse fields. The understanding was reached at a meeting between Pakistan's High Commissioner to Canada Zahir Janjua and Canadian Member of Parliament Salma Zahid in the Canadian capital. During the meeting with Salma Zahid, who is also the chairperson of Canada-Pakistan Parliamentary Friendship Group, the High Commissioner discussed ways to enhance parliamentary cooperation, increase trade, visa issues and people-to-people contacts between the two sides.
Salma Zahid expressed her desire to work together to strengthen ties between the people of both countries. United Nations has reaffirmed its commitment to deliver impartial humanitarian aid for the growing number of people adversely impacted by armed conflict, natural disasters and other emergencies. This was stated by UN humanitarian official Martin Griffiths while briefing the group of 77 developing countries in China, which is headed by Pakistan. He said that prolonged conflicts and spreading insecurity and violence in some parts have freshly uprooted millions of people, including 15 million in West and Central Africa alone. On this occasion, Pakistan's ambassador Amir Khan said the developing world has been especially hit hard by COVID-19 and climate change. He said combined with ongoing conflicts, these issues have exacerbated humanitarian crisis and driven up humanitarian needs. In Bangladesh, thousands of Muslims have demonstrated over remarks against the Holy Prophet Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khatamun Nabiyyin by an Indian official that sparked anger across the Islamic world. The protest was organized by Islami Andolan Bangladesh in Dhaka, one of the largest Islamist political parties in the country. Speakers at the rally called for a boycott of Indian products and demanded Prime Minister Sheikh Hasina formally to lodge a protest with India. Pakistan cricket team has claimed the third position in International Cricket Council's ODI ranking. According to media reports, Pakistan claimed the third spot in the ranking with a 106 rating. Australia slid down a position to number 4 after their loss to Sri Lanka in the second ODI by 26 runs. New Zealand remained on first with 125 points, while England claimed the second spot with 124 points. In ICC Men's Cricket World Cup Super League, England defeated Netherlands by 232 runs in the first one-day international at Amstel Green. Batting first, England set a victory target of 499 for Netherlands, which is the highest target in the history of ODI. In reply, Netherlands scored 266 in 49.4 overs. England lead the three-match series by 1-0. And now the weather report. Rain, wind, thunder shower is expected in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Islamabad, Northeast Balochistan, Gilgit-Baltistan and Kashmir during the next 12 hours. However, heavy falls and hailstorm may occur at few places during this period. Hot and dry weather is likely to prevail in west parts of the country. Temperature of some major cities recorded this morning are Islamabad and Lahore 23 degrees centigrade, Karachi 30, Peshawar 25, Quetta 24, Gilgit 18, Murree 16, Muzaffarabad 22 degrees centigrade. According to Met Office forecast for Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, cloudy weather with chances of rain, wind and thunderstorm is expected in Srinagar, Pulwama, Anantnag, Shopian and Baramulla. Partly cloudy with chances of rain, wind and thunderstorm in Jammu, while cloudy with chances of rain, thunderstorm is likely to prevail in Leh. Temperature recorded this morning are Srinagar and Baramulla 15 degrees centigrade, Jammu 26, Leh 8, Pulwama and Anantnag 16 and Shopian 14 degrees centigrade. And to end this news bulletin, here once again are some of the headlines. Financial Action Task Force has acknowledged the completion of Pakistan's action plans and authorized an on-site visit to Islamabad as a final step to exit from grey list. Prime Minister has filed a Stated Nation on Financial Action Task Force announcement, saying that it is recognition of restoration of Pakistan's international reputation. President has stressed the need to explore Gilgit-Baltistan's great potential in mining, agriculture and tourism sectors. The government has allocated over 100 billion rupees in the federal budget 2022-23 for the construction of dams. Pakistan cricket team has claimed the third position in International Cricket Council's ODI rankings. And that is the end of this news bulletin. For more news and analysis, log on to our website radio.gov.pk.
अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से पेश खिदमत है प्रोग्राम 0 पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद हरमैन और इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तरतीब दिया करते हैं प्रोड्यूसर मोहम्मद आजम खान। और जनाब आपके अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे ठीक दिन 10 बजे तक। यकीनन आप चाहेंगे कि हम आपको फोन नंबर बताएं ताकि आप प्रोग्राम में हो सकें शामिल, तो जनाब नोट फरमा लीजिए 92069995। ये है हमारा फोन नंबर और आप हमें मैसेज कर पाएंगे 4471 पर। अल्लाह ताला आपके गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मुअत्तर और माला माल रखे। खुशबू के लाजवाल खजाने के साथ अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और तमाम हाजात पूरी करे। के बंदे हैं, एक किताब के पढ़ने वाले, एक जमीन पे बसने वाले, एक ही परचम के रखवाले। क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं, क्या हम एक हैं। हम एक खुदा के बंदे हैं,